Comparative genomics. In order to manipulate the genomic DNA and to isolate our gene of interest, it is very important that we must have the comparison of genomes from one organism to another organism. So, what is the comparative genomics? तो इसमें हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जो डिफरेंट जीनोम्स में सिमिलैरिटीज हैं या डिफरेंसेस हैं वो फाइंड आउट कर सकें. सो इट इज़ अ प्रोसेस where we can know the differences and similarities of genomes from one organism to another organism. अब बहुत सारी जीन्स ऐसी हैं जिनके जो फंक्शंस हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में सिमिलर हो सकते हैं. तो ये उस वक्त हम इसका आइडिया लगा सकते हैं जब हम जीनोम की अलाइनमेंट करें और जो हाईली कंजर्व्ड रीजन है उनको फाइंड आउट करें. तो जो हाईली कंजर्व्ड रीजन होंगे वो इंडिकेट करेंगे कि इन जीन्स का जो फंक्शन है या जो प्रोटीन्स का फंक्शन है जो ये इनकोड करते हैं दे आर हैविंग द ओवरलैपिंग आर द सेम फंक्शन. किस तरह बहुत सारी जीन्स ऐसी हैं जो कि ह्यूमन में या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनका फंक्शन जो है वो सेम होता है. तो इस तरह से बाय यूजिंग कंपैरेटिव जीनोमिक्स we can study the process of evolution, how different organisms they have been evolved, what are the similarities and what are the differences, and within highly closely related organisms like the human, one can know that what characteristic feature they are unique in certain individuals. So here the comparative genomics, it is going to help us. As I told you that by comparative genomics, we can pinpoint the conserved regions within the DNA. Conserved region का मतलब ये है कि इनमें change नहीं आई. During the course of evolution or timing, those parts of the DNA, they have not changed. Because they have not changed, so that's why they are called as the conserved region. अब वो कंजर्व क्यों हैं, क्यों उनमें तब्दीलियां नहीं आई विद द पैसेज ऑफ टाइम? तो उसकी एक रीज़न जो बताई जाती है वो ये है कि चूंकि ये जो पार्ट्स हैं डीएनए के ये कोई वाइटल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते होंगे. वाइटल इन द सेंस कि दे आर गोइंग टू इनकोड वेरी इंपॉर्टेंट functional protein whose function it is very imperative or necessary for the living organism. So the comparative genomics to study different genes, we can distinguish the function of different genes or group of genes on the basis of two terminologies, that is what is orthologs and paralogs. As far as orthologs are concerned, they are the set of homologous genes in different organisms that perform the same function. कि ऑर्थोलॉग्स ऐसी होमोलोगस जीन का सेट है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो कि सेम फंक्शन करती हैं. कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैं, दे आर सो कंजर्व्ड कि ये बड़ा वाइटल फंक्शंस करती हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर कैटेगराइज्ड अंडर द हेडिंग ऑर्थोलॉग्स. ऑन द अदर हैंड, paralogs are those homologous genes that may be closely related within an organism, but they may not perform related functions. So in this way, these two sets of genes, they can be categorized under the heading orthologs and paralogs. इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारी जीन्स या बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वाइटल फंक्शंस करती हैं. Here we can quote the example of some proteins that mediate citric acid cycle, DNA replication, ATP synthesis, protein synthesis. So variety of proteins, they perform vital functions. तो ये जो functions हैं ये different organisms में होते हैं. Although organisms they are highly unrelated.
तो इस सिचुएशन में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि all those vital genes we can categorize under the heading like orthologs, but it is not the reality. Why? Because although genes, they perform the vital function in different organisms, but the sequence of the vital proteins and their three-dimensional structure, it can vary from one organism to another. And those variations in the structure or sequence, they may be due to mutations or minor mutations that the organism got during the course of evolution. So under such situations, the orthologs, they may be called as non-homologous orthologs displacement. And such ortholog displacement, it is very common where protein in one organism, it perform the function, and same in another organism, but still they are difference in their sequence and in the three-dimensional structure.